Pakistan's climate change minister Sherry Rahman saying in an interview that she fears a third of the country could be underwater by late September. घर बनाएं जहाँ कमाएं खाएं समझिए ना बारिश की वजह से घर में सारा पानी हो गया है सारी जगहें गिर गई हैं देखो बनाने के लिए अब कोई Prime Minister हमारे गांव में बहुत सैलाब आया, पानी बहुत आया, हमारे घर डूब चुके हैं, हमारे लोग माल और सादार हमारे सब मर चुके हैं। हम 2010 के फ्लड में तो मुतासिर हुए थे और बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से हमने अपने घर दोबारा तामीर किए थे। खून पसीना एक करके हम दोबारा घर तामीर किए थे। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ जिसका नाम है जेल, उसमें तकरीबन 40 to 45 घर थे, वो तो मुकम्मल तबाह और बर्बाद हो गए। People of Pakistan are currently suffering in the form of their lives, their livelihoods, for a catastrophe that is not of their making. Pakistan produces less than 1% of the carbon footprint, but is one of the worst affected areas from climate. Shahbaz Sharif flying over the disaster zone on Sunday, saying it was the worst monsoon Pakistan had seen in 3 decades. In a tweet saying the magnitude of the calamity is bigger than estimated. He's now pleading for international help.